you all, good morning and welcome to a hostel wala video after a really long time. I just came back yesterday only and getting back to college from today. It's so cold already. मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पर जाना तो पड़ेगा. So let's get going. Just look at the weather. इतना कोहरा. इतने कोहरे में मैं आज तक कभी क्लास नहीं गई हूँ क्योंकि यूजुअली इस टाइम तक हमारी एग्ज़ाम की डेट्स आ जाती थी और हम पढ़ाई कर रहे होते थे, हमारी छुट्टियाँ हो जाती थी बेसिकली. बट फाइनल ईयर में एग्ज़ाम्स थोड़े से लेट होते हैं एटलीस्ट हमारे कॉलेज में. तो हाँ, जाना पड़ रहा है. जनवरी में भी क्लास. I'm back from class. बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई आज. Just reviewed my video for Sunday and now I'm going to take a quick nap जिसके बाद हम वापस से पढ़ने बैठ जाएंगे. Let's go. Just took a shower. Now I feel much better. और अब मैं बैठ रही हूँ पढ़ने. By the way, a lot of you guys were asking about my exams. तो मेरे exams around March में होंगे somewhere because हमारे college में जो final prof होता है वो थोड़ा सा late होता है. But trust me, I am so scared because no matter जितना time मिल जाए final MBBS exams के लिए you can never be prepared. I'm really scared. अब बस 2 महीने बचे हैं. So let's get started with our pre-prep of our final year. Let's go. First of all, I'm so happy to be back at these voiceover kind of videos. I do love them. I almost feel like I'm talking to you guys personally. So I am starting with studying medicine. Genuinely, medicine is the subject for which I am the most scared in final year because it's the most humongous subject. मेरे videos अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं medicine के, which scares me even more. So I'm just finishing up all of my videos from Marrow first of all, post which I'll be beginning with my revision of all subjects in parallel. Okay, so I was just halfway through my study session और मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स जो मैंने पढ़ लिया है मैं उनको रिवाइज कर लेती हूँ साथ साथ. So I wanted to tell you about this very cool app which is called Quizlet and it can be used to create flashcards and to learn and to revise. काफ़ी cool है, मैं बताती हूँ. सबसे पहले तो you can create your own flashcards which is super convenient for those who don't know flashcards होते क्या हैं. So there are small pieces of cards जिन पे बहुत सारी information compactly लिखी होती है जिनको आप जल्दी से देख के रिवाइज कर सकते हो and they help you in revision and relearning of things. Now let me show you how to make a flashcard. You just have to download the app, click the plus option, write the question in the term column and the answer in the definition column. That's it. Your self-made flashcards are ready. Flip to see the answer and swipe right if you know the answer, swipe left if you don't know the answer. Thus you get an analysis of your answers at the end. And you can also create your own study guides on this app using AI. Just upload a photo of the documents or your notes page and Quizlet will turn them into flashcards for you. So what are you waiting for? Go check out the link in my description. Download the app and make your flashcards now. I was
ever since I've got back from my vacation, I was finding it really difficult to concentrate again on my studies. So here are a few things that I have started to do. Number one is I've started to track my study sessions. So I exactly track what time I start and what time I end, so that I exactly know that in an entire day how many hours of study am I locking, because that is really important. Because कई बार हमें लग रहा होता है that we're studying a lot, but then when you actually see the time you're locking, it's pretty less. My target is to lock 5 to 6 hours each day, with some hours of classes as well, because now exams are just 2 months away. But I'm not being able to reach that target as of now, but hopefully in a few days or a few weeks I'll get there. हाँ, बहुत थक गई हूँ मैं, अब मेरे सिर में दर्द होने लगा है, तो दिस ब्रेक वॉज नेसेसरी. मैं 2 घंटे पढ़ाई कर ली है. अब हम लेने वाले हैं ब्रेक. इट्स ऑलमोस्ट 2:40. ये खा के फिर आई गेट बैक टू स्टडीइंग. लेट्स गो. Back to the grind. The second tactic that has really helped me is that because I use the Forest app on my phone and I turn off complete internet, everything, Wi-Fi, mobile data, सब कुछ off. So no messages, no calls, my phone on silent, preferably the screen turned down. कभी कभी वो ऊपर भी रह जाता है if there's something urgent that I have to tackle. Okay, so I have logged almost 3 hours of study. एंड अभी आई हैव टू डू सम फिज़िकल मूवमेंट. पिछले इतने सारे दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पे. सो गेटिंग बैक विद सम योगा, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. लेट्स गो. Everyday physical movement is something that I've kept as my 2025 resolutions as well. I really want to keep moving my body each day, no matter how much or how less. And trust me, when you're studying, your body even needs it more, because you need that sort of refreshment, your daily dose of endorphins to just feel happy. Because personally for me, it gets really, really difficult to just be soaked inside the books and then not feel the way that I want to feel. So yoga, exercise, or maybe some sort of dancing really helps me boost up my mood and get back to studying with an even better mood. Alright you guys, yoga is done. I just had a call with my mom. अच्छा खासा 15-20 मिनट हमने बात करी. एंड नाउ आई हैव अ स्मॉल वर्क विच इज़ टू लाइक शॉर्ट लिस्ट अ फ्यू एडिटर्स. सो माई मैनेजर, शी हैज़ इनलिस्टेड अराउंड 8 से 10 एडिटर्स जिनको भी मुझे शॉर्ट लिस्ट करना है. एंड देन फाइनली आई कम टू लाइक 3-4 एडिटर्स जिनका हम इंटरव्यू लेंगे पर्सनली, जिनसे बात करेंगे. एंड देन वील फाइनलाइज वन न्यू एडिटर फॉर मी. लेट्स गो. Okay, so I'm ready for this second और थर्ड स्टडी सेशन ऑफ माइन. ये वाला स्टडी सेशन मैं करूँगी 2 घंटे का लगातार. इट्स 6:30 राइट नाउ और अब हम 8:30 ही उठेंगे. मैंने आज न्यूरो के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ आई हैव टू रिवाइज वट एवर आई हैव डन सो दैट इट सॉर्ट ऑफ स्टिक्स इन माई ब्रेन. और उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद फिर से रिवाइज कर लूँगी. तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मी फॉर द एग्जाम्स. लेट्स गो.
Number four, and probably the last thing that I'm doing, is to not push myself a lot out of my boundaries, because I feel that I've just come back from vacation. I've not been completely recovered, and to just jump in and straight up start studying for long hours can lead to a little bad impact on my body. So, not pushing myself a lot. So, for example, at this point, I was determined to do a 2 hour session, but didn't happen. After 45 minutes, I wasn't feeling my best. I started feeling this mellow headache, and I knew that now it's time to take a break, have my dinner. So that's what I exactly did. Ordered some groceries from Blinkit. जा रही हूँ मैं उसको लेने. I'm also trying to eat a little bit healthier than what I used to. So today I had ordered some greens, some veggies, and I thought of preparing a salad. So my mom usually has this thing for dinner. She boils up some cauliflower, some beans, nicely cuts them of course first, and then boils them. And that seems like a very healthy breakfast, and it is tasty also. So I thought of giving it a try today at hostel, and this was my perfect break time also. I turned on some music in my room and I cooked along with the music, and trust me, there's nothing that can rejuvenate me as good as music and dance does. Oh. अभी मेरा एक केटल, उसमें नीचे बहुत कुछ रेजिड्यू जमा हो गया था, तो मैंने उसमें गर्म पानी करने की कोशिश करी ताकि वो हट जाए, इजीली साफ़ हो जाए, और वो ओवरफ्लो कर गया और पूरा नीचे पानी फैल गया. भाई मेरी किस्मत थोड़ी सी ना. I'm so tired. It's time to do some skincare so that I maybe feel a little bit better. I don't know. Now I'm going with this Laneige ka lip sleeping mask. Oof, love it bhai. मिताली, हाँ क्या तुम्हारे फ्रिज में थोड़ी सी जगह होगी? हाँ यार मुझे ना ये नेक्स्ट सैटरडे तक रखवाना है. हाँ. चलेगा? क्या है ये इसमें ना मेरी मम्मा चिकन का अचार बनाती है. इट्स वेरी. तो चिकन है मेरे फ्रिज में. हाँ, लेकिन इसे मैंने 2 बार पैक करके रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. भाई व्हेन आई से ना कि मेरी किस्मत को पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, आई एम नॉट किडिंग. मतलब 2 days into studying very nicely for exams and look what has happened. पता नहीं तुम लोग को दिख भी रहा है या नहीं, पर मेरे को फिर से वही स्टाई हो गया है जो मुझे लास्ट ईयर भी हुआ था, सेम इसी टाइम पे, एग्ज़ाम्स के टाइम पे, जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ मेरी आंखें ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से दे इवेंचुअली टर्न रेड, जिसकी वजह से आई थिंक जिसकी वजह से आई थिंक ये स्टाइल डेवलप हो जाता है. I hate this season. I hate it.